today we start the next lesson. Lesson number 7, Introduction to the Ubuntu Linux and GUI. मतलब कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस बार आपको समझना है नया, जो हम हमें डेली लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट विंडो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसका नॉलेज हमें है, मगर उबंटू के बारे में हमें ज़्यादा इतना मालूम नहीं, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में उसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. Right now, we have already learned the operating system allow to use the two modes of interaction command, the link interface and graphical user interface. Chapter will be introduce you to Genome 2, desktop and different panels. We will also see how to customize the appearance of the Genome desktop. तो देखो Genome desktop क्या है, पहले ये समझ लेते हैं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट द फ्रीडम एंड चॉइसेस. लिनक्स इज नॉट एक्सेप्शन. मतलब ये तो ओपन सोर्स है, कोई भी यूजर उसे यूज कर सकता है. इट प्रोवाइड द मल्टीपल चॉइसेस द मोस्ट ऑफ द कन्वीनियंट components of operating system. Desktop manager is simply or desktop is the execution. Linux provide the several desktop managers including GNOME, KDE, Unity, XFCE, LXDE, and many more. First three desktops require more powerful system is better than the graphics capability. मतलब कि देखो कि लिनक्स का जो डेस्कटॉप है वो बहुत सारे डेस्कटॉप मैनेजर से जुड़ा हुआ है. आप कोई भी डेस्कटॉप आप यूज कर सकते हो. लास्ट टू डेस्कटॉप आर लाइट वेटेड एंड रन क्वाइट कैनर. उसके जो दो दो रहते हैं वर्जन्स, जीनोम एंड जीनोम, ये दे आर कॉल्ड द रन एंड लाइट वेटेड एंड इट इज़ द डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप बोला जाएगा कि ऑलरेडी जब जैसे ही हम उबंटू इंस्टॉल करेंगे तो इट विल बी ऑलरेडी गिवन दैट यूनिटी डेस्कटॉप है. ओके, you can install different desktop as per your choice. Genome 2 provide a very good desktop environment personal computer users. When the Genome 2 desktop start, when we get a screen. The three major components of the screen: top panel, bottom panel, and the desktop. The part of the screen between these panel. In the general, left-clicking item select the active item panels like menus, indicator, and application launchers. Execute the corresponding action of the single click, while desktop shed execute programs, while Nautilus file browser will execute only the double clicking. The right clicking on an item bring up the floating menu of the option to specific of that item, known as the context menu. However, the items called keeping the mouse cursor and little long period offer bring the window called tooltip explaining that item brief. Now, टॉप पैनल मतलब क्या. अभी जो देखो डेस्कटॉप में टॉप पैनल रहता है, बॉटम पैनल रहता है और मिडल पैनल. तो देखो फर्स्ट टॉप पैनल में क्या डिफाइन करता है. इट कंटेन द मेनू बार, three items placed with the application launchers, session menu empty with the user place the content folders, application launchers एंड क्विक एक्सेस. मतलब कि देखो वहाँ पे डेस्कटॉप पैनल में क्या रहेगा, एप्लीकेशन लॉन्चर. जैसे ही आप शॉर्टकट की डिफाइन करते हो तो उसके अंदर फाइल्स रहेंगी, फोल्डर्स रहेगा, क्विक लॉन्चर्स रहेगा. तो ये सारा कहाँ पे रहता है, डेस्कटॉप पैनल में, मतलब कि टॉप पैनल में. नाउ नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन मेनू. दिस मेनू कैटेगरी सब मेनू ऑफ द एप्लीकेशन installed in the system as shown in the figure. One can run the application selecting from this menu hierarchy. तो देखो यहाँ पे ये रहा हमारा डेस्कटॉप, जीनोम डेस्कटॉप जो बोला जाएगा. इस तरह का उसका लुक रहता है. मेनू बेर, एप्लीकेशन लॉन्चर्स, नोटिफिकेशन एरिया, सेशन में मेनू, टॉप पैनल्स, डेस्कटॉप. बॉटम पैनल में देखो शो द डेस्कटॉप आइकॉन्स, रनिंग एप्लीकेशंस, वर्किंग स्पेस, फीचर्स एंड थ्रैश कैन मतलब जो डिलीटिंग फाइल्स और फोल्डर्स की बोला जाता है. नेक्स्ट है देखो इस तरह का डेस्कटॉप. एसेसरीज में जाके आप जी एडिट टेक्स्ट एडिटर ओपन
कर सकते हो। तो देखो एक एक एक, एक समझना है केस सीरीज मतलब क्या। द कैटेगरीज एंड द कॉमन प्री इंस्टॉल हैज अ सॉफ्टवेयर हैज मेनू performing the basic arithmetic and logic as well as the scientific calculation. CD DVD creator for writing the CD DVD. The disk usage of the analyzer and for creating plans and printing. The take a shot for the creating of the circuit screen. Display the main image for the terminal using CLI and the Tombe notes for creating the computer notebooks. Write down your ideas and thoughts, the organization and the searchable way. Games. Games means it contains some computer games that you can play for relaxing. ओके, फॉर रिलैक्सिंग गेम्स जो आते हैं। और एसेसरीज मतलब जहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, डीवीडी और सीडी का कोई भी राइट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो, राइट। बहुत सारे एप्लीकेशंस आप वहाँ पे यूज़ कर सकते। नेक्स्ट इज द ग्राफिक्स। नाउ graphics HubSpot for Photo Manager for managing the photographs using taking a digital camera, mobile phone camera, GIMF image editor for editing the images. For draw the drawing and the printing, painting the simple drawings and the simple scan for scanning the document for pictures for using a scanner. इंटरनेट, अब इंटरनेट तो आपको मालूम है कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी एक आइकन आपको मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट में वहाँ पे क्या रहता है, मोजिला तो है ही डिफ़ॉल्ट में, मगर माइक्रोसॉफ्ट में डिफ़ॉल्ट में कौन सा रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट ऑफिस। ऑफिस तो आपको मालूम है जहाँ पे हम वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सब यूज़ कर सकते हैं। फॉर द डॉक्यूमेंट राइटिंग वी कैन यूज़ द वर्ड, फॉर कैलकुलेशन वी कैन यूज़ द एक्सेल। ओके, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, लाइब्रेरी ऑफिस यूज़ होगा। Now, Ubuntu Software Center, if it is not satisfied for the built-in application provided, these are the thousands of the applications where the paid as well as in the software reputed, hosted, maintained in the canonical and its partner efficient. Debian project on which the Ubuntu is based, the community and the options provide access to the host of the application for the study and play. We can download from the Ubuntu software in the Ubuntu Software Center. The place मेनू, यहाँ पे देखो प्लेसेस मेनू मतलब क्या है, होम फोल्डर, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट रहता है ऑलरेडी दे कैन रेडीमेड। तो देखो फर्स्ट क्या है, होम फोल्डर विथ ओपन एंड करेंट द लॉज यूजर होम डायरेक्टरी and this browser has described the detail of the next chapter. Desktop. When I open desktop is folder, this is a folder inside the user desktop directory. Any file place where the display on the user's desktop, any file place graphically on the user desktop lands up. Next is the document. This is a again folder inside the user home directory meant as storing the user personal document. Music. This folder is inside the user home directory, can be used to store the files. Music. This folder is inside the user home directory, can be used to store the pictures. Video. This folder is inside the home directory, can be used to store the video files. Download. File download have from the internet are saving in this folder by default if the required setting can be changed easily. Computer. It show all the fixed and removable storage devices present in the computer. Network. Network means it show all the computers running on the Ubuntu or a Windows operating system on the same network. If the sharing is unable of the some of these computer can easily copy and transfer the file from those computer, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेटवर्क। अगर दूसरे नेटवर्क में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, वी यूज़ द internet. Now connect to the server.
This option is used to connect the various types of the powerful servers. Computer running any Unilike or a Windows operating system. Large organizations use a server computer to provide the common service to the computer on the network. Now, search for the files. This option is used to search a file by their name by user forget and the directory file was saved. रिसेंट डॉक्यूमेंट रिसेंट मतलब जो फाइल्स पहले से बनी हुई है उसको ओपन करके आपको देखना है तो उसके लिए शो द list of the files recently for one of the reopen and the navigated the directory structure and also used to cache and the different directory want to open the latest version. Bookmark means the places menu also display the bookmarks so you have created in the Nautilus. If there is only the few of them, they are displayed in the directory in the places menu. Otherwise, they are collaborate together. Bookmark menu. This bookmark let you frequently access directory quickly. Now, removable device मतलब कि कोई भी अगर आप CD, DVD या पेन ड्राइव इंसर्ट करते that is called a removable devices. Next is the preference menu. The preference submenu is used to be customized and the systems of the options were discussed here with. About me, it allows the currently logged user to view the modify their profile. Appearance means used to change the desktop background image. Background image कुछ ना कुछ desktop wallpaper या color fonts आपको change करना है. You can go for the appearance. Assistive technology, it provides the special programs for the setting and physical challenge for the people use the menu. Main menu मतलब it show the menus which do not and no with odd and modify their items. मम्मी वो करता हाँ power management. It used to set and may use for the certain duration. It also you decide that action for a computer is running battery backup like a laptop running on the battery with a critical low power band मतलब कि अगर आपकी बैटरी कम हो गई है तो आप you can use that. Monitors मतलब it define the number of such rows. Mouse मतलब it find the mouse settings and network connection मतलब it show the network settings. Preferred applications में it let you choose the favorite applications for the common internet of the multimedia running with a battery life. Remote desktop, it allow to show the desktop with someone else when you share your desktop with someone. We both use has used their desktop continuously update with the basis. मतलब ये क्या है desktop sharing मतलब क्या है remote मतलब अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दूसरे नेटवर्क के सर्वर से दूसरे डेस्कटॉप को अपना परमिशन देके अपने डेस्कटॉप को यूज़ करने की एक परमिशन देता हूँ. दैट इज़ अ टेक्निकल टू कंट्रोल ऑल द यूज़र टू द ट्रबल शूटिंग. अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम में मेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पा रहे तो आई कैन यूज़ द रिमोट डेस्कटॉप की मतलब कि मेरा कोई भी डेस्कटॉप यूज़ करके मेरे प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है एज ए टेक्निकल सॉल्वर. ओके टू एक्सेस योर कंप्यूटर. नाउ नेक्स्ट वीडियो फॉर द स्क्रीन सेवर. तब तक के लिए थैंक यू.